Hello, my dear children. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths Class 4th. Children, this is your book and the name of your book is Joyfull Mathematics. So let's start a new chapter today, and this is chapter number 13 of your book, and the name of the chapter is Patterns. So let's start the chapter. Herein exercise is given. You have to look for the pattern and complete the series. यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, इसे ध्यान से हमें देखना है and then we have to complete this series. So first हम देख सकते हैं एक सर्कल है जिसमें एक डॉट है, एक सेमी सर्कल है, अगेन देयर इज अ सर्कल, सेमी सर्कल, सर्कल. तो यहाँ पे क्या आएगा? Obviously there will be a semi circle here. Now next में आएगा एक सर्कल with a डॉट और नेक्स्ट आएगा एक सेमी सर्कल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट सन, मून, सन, मून, सन एंड देन मून, अगेन सन, and next one is the moon. I hope you are getting it, you are understanding it. Now let's move on to the next pattern. Next pattern क्या है? ध्यान से देखेंगे. 12, then 22, 32, 42 means जब हमने 22 में से 12 को हमने subtract किया तो आंसर आया 10. means हम 10 नंबर्स को यहाँ पे लीव कर रहे हैं. तो 42 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 52, again 62 and then 72. Clear? Now next pattern क्या है? Let's see this pattern. F पे आते हैं. अब ये है 201, 301. जब हमने इन दोनों को subtract किया 301 और 201 को, तो हमने क्या देखा कि 100 का डिफरेंस है. So we have to give 100 difference here. So 401, 501, 601, 701 and 801. I hope this is clear to you. Now patterns have great importance in mathematics. Mathematics में इसका काफी ज़्यादा importance है. And the study of pattern helps student in learning to observe relationship and to find connection. So relationship को observe करने में और connection को find करने में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. It also helps student to make deduction, generalization and prediction. Students ये सारी चीजें भी इन patterns के through सीखते हैं. We use the term pattern in variety of ways in daily life. ये जो pattern है हम अपने daily life में use भी करते हैं. A dress pattern, dress का एक pattern, carpet का एक pattern है, wall का pattern है. And we have already studied about some geometrical patterns in class 3. So class 3 में भी बहुत सारे patterns के बारे में पढ़ चुके हैं. Here you can see there are different patterns that we see in our daily life. The pattern considers in this chapter involves number relationships only. Now what is number pattern? So arrangement of numbers which has the mathematical relationship is known as number pattern. So numbers को arrange करना, उन्हें mathematical relationship show करना, this is called number pattern. A specific rule is assigned to each pattern. हर एक pattern में एक अलग तरीके का rule assign होता है. For example, by adding two consecutive numbers we get. दो consecutive numbers को जब हम add करते हैं तो हमने जैसे 1 और 2 को ऐड किया 3 मिला, 2 और 3 को ऐड किया तो 5, 3 और 4 को ऐड किया तो 7, 4 और 5 को ऐड किया तो 9 and so on. So 3, 5, 7, 9 is a number pattern. ये एक number pattern है. Observe the pattern given below and complete them. So कुछ patterns दिए गए हैं, उन्हें हमें देखना है, उसके बाद fill करना है. Here you can see add 4 consecutive numbers. 4 consecutive numbers को ऐड करना means 1, 2, 3, 4 को ऐड करके आया आंसर 10. फिर 2, 3, 4, 5 को ऐड करके आया
14. 3, 4, 5, 6 को ऐड करके आया 18. And 4, 5, 6, 7 को ऐड करके आएगा क्या? That we have to find out. So this do on your own. Now the next example is adding 4 consecutive even numbers. Even numbers को ऐड करना 2, 4, 6, 8 is equal to 20. 4, 6, 8 and 10 is equal to 28. Now 6, 8, 10 and 12. It's 36. Now what will be the answer of 8, 4, 12 and 14? So find it and write it here. Now look at the pattern here. You can see there's a pattern given in your book. एक pattern दिया गया है. The numbers on the top of the sum we obtain when we add the two numbers below it. जब इन दोनों numbers को add करते हैं तो ये number हमें मिलता है. यही pattern है यहाँ पे. Fill in the missing number in the following. So 91, 85, 79. So next number is you have to find out of is 67. So जब हमने 91 और 81 को 85 को subtract किया तो हमने देखा कि 6 numbers missing है -6. Similarly हमने 85 और 79 को minus किया तो आंसर आया -6. 79 minus 70. अब 79 में से हम -6 कर देंगे तो we will get 73. Here we have to write 73. अब 73 में से हमने 6 minus किया तो आया 67 और फिर 6 minus किया तो आया 61. So the missing number are 73 and 61. इसलिए जो missing number है वो 73 और 61 है. Patterns in multiplication. अब multiplication में क्या क्या patterns है? For example, observe the following pattern and complete them. यहाँ पे कुछ patterns दिए गए हैं, हमें इन्हें complete करना है. So when we look at this pattern, which is 1 multiply 1 is equal to 1, 11 multiply 11 is equal to 121, and 111 multiply 111 is equal to 1, 2, 3 to 1, and so on. हमने 4 times 1 किया, उसको multiply किया 4 times 1 से, so we get this number. अब हमने क्या किया है? 5 times 1 को 5 times 1 से multiply करना है. What number do we get? Next. Similarly, 5 multiply 5 is 25, 15 multiply 15 is 225, and 25 multiply 25 is 625, 35 multiply 35 is 1225 and so on. So यहाँ पे हमने क्या किया है? हर एक नंबर को उसके दूसरे नंबर से multiply किया. Now you have to find out 45 multiply 45. You have to do on it on. Now some more patterns. Let's learn about some more patterns. Here example to you can see. You have to complete the following pattern. Pattern दिया है, आपको इसे complete करना है. So पहले हम क्या देखेंगे? First question is 67, 62, 57, 52. So what number will come next? So हम क्या करेंगे? 67 और 62 के बीच में हम difference करके देखेंगे. तो आंसर है 5. अब 62 और 57 के बीच में difference किया तो आंसर आया 5. तो हमें क्या करना है? 5 numbers का difference लिखना है यहाँ पे. So the pattern is जब हमने 5 number subtract किए तो आंसर आया 47, 42 and 37. Similarly next question है 2, 4, 8, 16, 32. अब इसमें किस पैटर्न को लगाया गया है? 4 minus 2 is equal to 2. Next 8 minus 4 is equal to, you can see here 2 times is 4, 4 2 times is 8, 8 2 times is 16, 16 2 times is 32. So this is a pattern. अब इसी pattern को आगे continue करना है. So 32 multiply 2 is 64, 64 multiply 2 is 128, 128 multiply 2 is 256. So here the answer is 64, 128 and 256. So this we have to fill in the blanks. Now the next question is, next example is fill in the missing number in the given figure. Figure दिया हुआ इसमें हमें missing number को fill करना है. So यहाँ पे बहुत सारे numbers लिखे हैं. One number is missing. We have to find out which number it is. तो हमने क्या किया है? इस पूरे figure को इस shape में divide कर लिया है. कैसे? जब हमने 3 को 2 times लिखा
तो आंसर आया 6. 5 6 are 30. 5 8 are 40. अब 3 7 are, it will be 21 here. You can see here. So this was a pattern. Now let's do this exercise 13.1. So जब हम exercise 13.1 में आते हैं तो हमने क्या देखा? Numbers are written here 5, 9, 13, 17. So let's subtract these two numbers. जब हमने 9 में से 5 को subtract किया तो आंसर आया 4. Similarly अब 9 13 में से हम 9 को subtract करते हैं तो आंसर is 4. Similarly 30 minus 7 करके देखते हैं, sorry 17 देखते हैं. So here also the answer is 4. हमें क्या करना है? 4 number add करते जाना है. So अब हमने 17 and 13 था तो हमने इसमें 4 ऐड किया तो 17 आया. अब 17 में हम 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 21. ना 21 में अब हम 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 25. Now 29. So this is the answer, children. Similarly, you have to do the next one. Here you can see what difference is there. यहाँ पे multiplication table है. 3 times is 9. अब 9 3 times is 27. Multiply करना है. अब 27 में हमने 3 को multiply किया. So जब हमने 27 में 3 को multiply किया तो क्या आंसर आया? It's 81. अब हम क्या करेंगे? इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम 81 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. So here the answer will be 343. Again let's multiply 3 here. It's 729. Let's multiply 3 again. So it's 2187. So children, this is the answer that we get. Now let's move on to question number 2. Here what we have to do, we have to study the pattern and find the missing number. यहाँ पे pattern दिया है. Let's study that and find the missing number. So 2 plus 1 आया 3 and 3 plus 2 आया 5. 3 plus 4 is 7. Similarly, 5 plus 3 is 8. 5 plus 7 is 12. Now 8 plus 12. Let's do 8 plus 12, which is 20. So 20 will be the answer. Now let's do this. Let's do this question here. So what we have to do here, children, we have to divide this number by 3. So जब हमने 36 को 3 से divide किया, what we get? We get the answer 12. फिर हमने 12 को जब 3 से divide किया तो हमें आंसर मिला 4. Similarly, अभी जो है हमें क्या करना है? 3 को 3 से divide करना है. We will get answer 1. So similarly, children, you have to complete the rest of the patterns that are given here. Now let's move to question number 3. Here you have to study the following pattern. Let's see what's written here. 2 2 times is 4 and 1 1 times is 1. So 4 minus 1 is 3. So 2 plus 1 is 3. Next 3 3 times is 9. 2 times is 4. 9 minus 4. So it's 5. And 3 plus 2 is again 5. Next, 4 multiply 4 is 16. And 3 multiply 3 is 9. Now 16 minus 9 is equal to
7. Next, 25 minus 16. So here the answer is 9. I hope this is clear. Now find the value of the following. इन numbers की value आपको निकालनी है जैसे यहाँ पे निकली हुई है. So हमें क्या करना है? 45 multiply 45. Children, in this question number 3, what we have to do? हमें क्या करना है? We have to observe it. हमने क्या देखा कि यहाँ से 2 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ से 1 को कॉमन लिया, दोनों को ऐड कर दिया है. So it's 3 here. फिर हमने यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 2 लिया और दोनों का ऐड करके बन गया 5. यहाँ से 4 लिया और वहां से 3 लिया, so ये दोनों मिलके बन गए 7. Similarly, 5 from here and 4 from here became 9. सेम हमें यहाँ पे भी करना है. हमें क्या करना है? 45 लेना है फर्स्ट में से और दूसरे में से 44 लेना है. तो what will be the answer? Let's write. It's 89. Similarly, 94 plus 93. Next, 115 plus 140. Again, 219 plus 218. So children, this is the way of finding the value of the numbers. Now children, let's learn about coding and decoding. Secret messages can be coded and decoded by understanding the pattern they follow. So कुछ secret messages हैं जिसे हम कोड कर सकते हैं या फिर डिकोड कर सकते हैं. कैसे? कुछ पैटर्न को फॉलो करके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A से लेके Z तक लिखा हुआ है. As we all know that there are 26 letters in English alphabet. तो A को हमने नंबर 1 दिया है. Similarly B2, C3, D4 and so on. Z को हमने 26 नंबर दिया है. So by using this code we have to write different code messages. हमें अलग अलग code messages लिखने. For example here the number is 7520. So 7 के place पे क्या है? G, 5 E and 20 is T. So it will be get. Similarly 23 is W, E and double L. Well. Again 19 is S. Then 2 times 15 is O, double O and 14 is N. So here the message comes as get well soon. So like this children, let's start this exercise which is exercise number 13.2. So 13.2 start करते हैं. Here you have to use the above code. यहाँ जो code दिया गया है इसे use करना है और हमें इन messages को decode करना है. So here the first is 23. So 23 is W. 5. Next, the 12 2 times. Well and 4 number पे है D. 15 is O. 14 is N and 5 is E. So यहाँ पे जो हमारा secret message है that is well done. Next is 7 which is G. Next 15 it's go. Next 7 G. 18 is R. Next 5 again 5 and 14. So यहाँ पे हमारा secret message क्या बना? Go green. I hope this is clear to you. Now let's come to the next exercise. Write the following using words using the code given in question number 3. So codes को हमें देखना है और उसके according we have to write here. So यहाँ पे best के लिए it will be 2, 19 and 20. Similarly, you have to write down the code on seeing the alphabet list.
Now here, let's come to the third question. You have to understand the pattern and complete the code. So this you have to do on your own, children. क्या pattern बन रहा है और क्या code है? According to that, you have to complete this code. So children, with this, we have completed the chapter. I hope that you have understood this chapter of patterns very well. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay lated.